सर ये गलत ऑर्डर सर ये। ठीक है, इसको जाके चैलेंज करिएगा। चैलेंज सर, ये उमा देवी के सर जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर। सर इनकी पॉलिसी अलग है, उसके अकॉर्डिंग सर ये सबका नियमितीकरण हो चुका है ऑलरेडी सर। कौन सा रूल्स लगाया? चलिए बैकडोर एंट्री नहीं सर। एक मिनट रुकिएगा, कौन सा रूल लगाया आपने? 2011 बहस मत करिए, पहले रूल बताइए, कौन सा नियम लगाया आपने? सर 2011 का। कहाँ है 2011 का रूल बताइए सर 2011 आप ऑर्डर है। नहीं सुनेंगे आपको जो करना चाहिए अपील में करिए। डायरेक्शन देते सर मेरे केस कोर्ट में ना लगाए जाए सर। नहीं, ऐसा नहीं था डायरेक्शन। सर इस तरीके से सर अगर केस को सुनेंगे सर, क्या मतलब सर? न्याय के लिए सर यहाँ पे आते हैं, इस तरीके से सर ऑर्डर लेने के लिए नहीं है। न्याय नहीं मिलता सर यहाँ को सर। हाँ ठीक है, न्याय नहीं मिलता, इसलिए सर डायरेक्शन मेरे हमारे डायरेक्शन नहीं दूंगा। हमारे केस यहाँ पे ना आप लिख के दे दीजिए चीफ जस्टिस साहब नहीं को। करना चाहते आप वहां लिख के दे दीजिए, आप लिख के दे दीजिएगा। आप क्या बहस करते हैं सब रिकॉर्ड हो रही है, आपको कितनी बहस आती है, कितनी करते हैं आप, सब लिखाया जाता है। नहीं सर, नहीं लिखा जाता ना सर। ठीक है। Next P1, by which the respondents have advertised the post of ANM. The petitioners, both petitioners are working as an AM on contractual basis lordship since 2008. लास्ट डेट निकल गई, आज क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? सर मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म भरने के लिए नहीं सर। इन द ईयर ऑफ 2011 your lordship, the respondents have issued a order your lordship. May kindly see that order is at annexure P3 page number 30. In that order your lordship, the respondent number 2 has directed to CMHO to regularize the service of your lordship. The name of the ANM has been mentioned in that list your lordship. The name of petitioner number 1 is mentioned at serial number 26 and the name of petitioner number 2 mentioned at serial number 43 your lordship. And your lordship, on the basis of this order your lordship, no action has been taken by your lordship the authority. Then the petitioners have approached to this honorable court by filing a writ petition number 16978/2012 your lordship, that has been disposed of by order dated 22/6/2018 directing the respondents to decide the case of the petitioner on the basis of circulars and other orders your lordship. Nothing has been done. Then the petitioner have submitted the representation your lordship, and in that petition your lordship the state has also filed the return, and in return they have specifically admitted that there is no vacant post. If in the future the vacancy will come, the claim of the petitioner will be considered your lordship. Now your lordship, there is a 400 पद ही नहीं थे तो कैसे हो जाएंगे आप? नहीं सर मैं वही बोल रहा हूँ पेज 40 पे सर, वो पढ़ चुका हूँ सर, उसमें पद नहीं है। और रिप्लाई में सर उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी पद रिक्त होंगे हम आपका कंसीडर करेंगे। सर अभी एडवर्टीजमेंट जो आया सर, आपका तो एक और फैक्ट है, आप व्यापम के माध्यम से फेल हो चुके हैं। वो सर अलग बात है। वो अलग ये नियमितीकरण सर वो तो डायरेक्ट एग्जाम होता है सर, जो व्यापम वाला होता है सर, वही अभी फिर से इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है। उसमें सर एसटी की 412 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। कौन सी पोस्ट है, कैडर क्या है इसका? हाँ सर, ये है ना पेज नंबर सर, आप देख लें इसको, पेज नंबर 21 देख लें सर। पेज 21, यस। पोस्ट कोड 34 में सर ये अनुसूचित जनजाति के लिए सर 400 टोटल 478 पोस्ट है सर। सर ये पोस्ट केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए? हाँ महिला, हाँ सर ये महिलाओं के लिए होता है सर ये एएनएम। उसमें संविदा कर्मी की भी तो 96 है। 96 है सर संविदा कर्मी। अरे भाई टोटल 96 है संविदा कर्मियों के लिए। हाँ संविदा कर्मी के लिए 96 है। तो संविदा कर्मी है सर, वो ये संविदा कर्मी के रूप में कार्य करेंगे, जो नियुक्ति होगी इनकी, ये उनके लिए सर 96, उनको मिला के सर टोटल 478 पद है सर। बताइए भाई। वो संविदा में जो कर्मी भूतपूर्व सैनिक जो रहे उनके लिए नील है। जो संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उनके लिए 96। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, इनको पार्टिसिपेट करना था ना। पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो होगा, वही तो हमने भी कहा सर। पार्टिसिपेट चूंकि हमारा सर ये जो 2011 का 11 का, तो वहां जाके कंटेम्प्ट लगाइए, आप जाकर कंटेम्प्ट लगाइए, अपना कंटेम्प्ट में जाकर लगाइए। सर मैं इसीलिए सर, मैं ये पिटीशन जो मैंने सर फाइल की है सिर्फ इसीलिए फाइल की है सर, क्योंकि सर ये वैकेंसी निकली हुई है सर।
तो सर इनका जो स्टैंड था सर, चूंकि पद खाली नहीं है सर, तो सर कम से कम अगर उस वक्त खाली नहीं था। सर अब तो खाली है सर, हाईकोर्ट अब का तो डायरेक्शन हमारे पढ़े, हाईकोर्ट का डायरेक्शन पढ़ते हैं, हाँ सर, पढ़िएगा, पेज 33 पे पढ़िएगा। इन व्यू Reached to a consensus. It is agreed that if petitioner prefers a comprehensive fresh representation seeking regularization in the light of recent circular 7-10-16 से तो ये पोस्ट वैसे भी नहीं भरी जानी है, आपका पूरा क्लेम ही मिसप्लेस्ड है। 7-10-16 जो है वो सिर्फ रेगुलर, वो सर विनियमितीकरण के लिए सर, वो तो विनियमितीकरण के लिए, नियमितीकरण के लिए है ही नहीं सर। नहीं, फिर ये ऑर्डर ही आपके पक्ष में नहीं है। जो ऑर्डर आप हमें दिखा रहे हैं वो ऑर्डर ही आपके विरुद्ध है। सर इन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए सर, नहीं, रेगुलराइजेशन इन द लाइट ऑफ इट्स क्वालिफाइड ऑर्डर, यू सीक रिव्यू ऑफ दिस ऑर्डर, आई डोंट नो व्हाट वेयर इज योर रेमेडी बट नॉट हियर। but your lordship, my contention is that your lordship, when in the जो P3 है सर, ये रिस्पोंडेंट नहीं सर ये इश्यू किया है, क्या होगा सर इसी के बेस में सर हम अपना हमारा पूरा क्लेम सर, जो पिटीशन हमने फाइल की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में आपने फिर पिटीशन लगाई P4 में ऑर्डर उसमें रिप्रेजेंटेशन भी सर अथॉरिटी इन द लाइट ऑफ 7-10-2016 हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया सर, अथॉरिटी ने उसको फॉरवर्ड किया है सर, स्टेटमेंट देखिए पेज नंबर 40। साहब उसको फॉरवर्ड किया होगा, दैट विल नॉट क्रिएट एनी राइट इन योर फेवर। इशू इज वेरी सिंपल, दैट हाई कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर saying that your representation is to be decided in terms of the policy dated 7-10-2016. 7-10-2016 does not create any right in your favor to regular appointment. And therefore your authorities may do anything that will not create any right to interfere in the advertisement. You may participate, you should have participated, you should have paid the... But my stand is that, your lordship, when your stand is that, and please file contempt petition that order passed by the writ court on 22/1/2018 is not being... कंटेम्प्ट की कार्रवाई सर एक अलग चीज हो जाती है सर। मेरा यहाँ पे सर क्लेम ये है चलिए कि मैं लिखा देता हूँ, लिखिएगा। चलिए, विकास मिश्रा, learned counsel for the petitioner. This petition is filed by the petitioners being aggrieved of the advertisement issued by the Madhya Pradesh Employees Selection Board, Bhopal, for conducting an examination for recruitment to Group 5 posts of staff nurse, A&M, assistant veterinary field officers and equivalent posts through backlog. Full stop. Petitioners, next para. Petitioners' contention is that through this advertisement, 478 posts of A&M have been advertised for ST category, and petitioners are members of ST category. Full stop. They were already working as A&M. Full stop. A state government wide order dated, state government day, Director Health Services wide order dated 21/9/2011 had directed the chief medical and health officers of the concerned districts to give benefit of regularization against the vacant posts of A&M in their districts. It was also directed that if posts fall vacant in future, then such persons should be given benefit of regularization. In this list, name of the petitioner, Kumari Kalavati Chhata, appears at serial number 26, whereas Srimati Kamla Gotia at serial number 43. Full stop. Next para. It is submitted that when this order dated 21/9/2011 passed by Director Health Services was not followed, then petitioners had preferred WP 16978 of 2012, which was disposed of wide order dated 22/1/2018. Full stop. In that case, respondents had filed their return also. Full stop. Along with return, they had filed communication made by the Chief Medical and Health Officer Dindori dated 21/3/2018
to the effect that for want of post for ST category, 2 persons could not be regularized. Full stop. It is submitted that now since posts are available, petitioners should be regularized. Next paragraph. Shri Manasmani Verma, learned government advocate, in his turn submits that it is evident from the advertisement that out of 478 posts, 96 are meant for contract employees. Admittedly, petitioners are working on contract basis as A&M. Full stop. Therefore, they should have filled the form and should have participated in the selection process in as much as 96 posts are specifically reserved for regularization of contract A&Ms. But petitioner did not fill the form and now is claiming advantage from backdoor. Next para. It is further submitted that order dated 22/1/2018 passed by a coordinate bench in WP 16978/2012 gives liberty in favor of the petitioner therein to file a comprehensive fresh representation seeking regularization in the light of circular dated 7/10/2016 issued by the General Administration Department. Full stop. It is submitted that circular does not deal with regularization of the service in the cadre of A&M. It only deals with regulation, not regulation, regulation of services of skilled, semi-skilled and skilled laborers so that they are not faced with sword of retrenchment again and again. Full stop. It is further pointed out that as per order dated, communication dated 14/3/2018 signed by the Chief Medical and Health Officer Dindori on 21/3/2018, petitioner had earlier appeared in examination conducted by Vyapam and had not succeeded, and petitioners could not be given regularization for want of post, and therefore now through backdoor they cannot seek regularization when advertisement is issued. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that order passed by a coordinate bench in WP 16978/2012 has nothing to do with the regularization of the petitioners in terms of the scheme for regularization in which is to be adopted in terms of the orders of the Supreme Court in Uma Devi पूरा citation लिख लीजिएगा. Next paragraph. If petitioners are aggrieved of non-compliance of order dated 22/1/2018 in WP 16978/2012, then their remedy lies somewhere else. Stop. Regularization in service has to be made on the parameters which are laid down by Supreme Court in Uma Devi. Full stop. As per the law laid down by Supreme Court in Uma Devi, cases of only those persons were to be considered who had put in 10 years of service by then. Full stop. Admittedly, petitioners were appointed as A&M in the year 2008. Therefore, they were not entitled to be considered on the touchstone of the law laid down by Supreme Court in Uma Devi. Next paragraph. Now, the advertisement has been issued to fill the backlog posts. There is a specific quota for contract employees. Therefore, petitioners were free to apply for their regularization in terms of
for their regular appointment, regular appointment in terms of the said advertisement for wherein there is a specific quota of 96 posts for contract employees like the petitioners. Having failed to avail the facility and participate in the selection process, they cannot seek regularization through a back door. Therefore, petition being devoid of merits deserves to be dismissed and is hereby dismissed. सर मेरे एक निवेदन सर उसमें सर बैकडोर एंट्री सर जो आपने सर लिखा दिया है सर ये तो हमारे अगेंस्ट आएगी क्योंकि सर ये बैकडोर एंट्री नहीं है सर, ये सरकार के आदेश में काम कर रहे हैं सर। मैंने क्या लिखा है इसको पढ़िएगा उसके बाद में प्लीज। आई एम नॉट सपोज टू आंसर ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये उम्मत सर ये इनके लिए सर अलग पॉलिसी है रेगुलाइजेशन की सर, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई सर। उम्मत एबी का जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर। ठीक ठीक चलिए सर ये गलत ऑर्डर सर, ठीक है, इसको जाके चैलेंज करिएगा। चैलेंज सर ये उम्मत एबी के सर जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर। सर इनकी पॉलिसी अलग है, उसके अकॉर्डिंग सर ये सबका नियमितीकरण हो चुका है ऑलरेडी सर। चलिए नेक्स्ट केस। सर कम से कम जो मैंने दस्तावेज लगाया सर उनको तो कंसीडर करके सर ऑर्डर लिखा है, भले ही आपने खारिज किया है पर कम से कम सर जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए सर Mr. Vikas Mishra, Sir. this is not the way. Whatever you are. जो सर जो मेरा आर्गुमेंट है सर उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा सर, जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया सर उनको कंसीडर। कौन से आर्गुमेंट को आपके कंसीडर नहीं किया गया है? सर मैंने सर जो रूल्स है सर जो 2011 का ऑर्डर सर वो बैकडोर। कौन सा रूल्स लगाया? चलिए बैकडोर एंट्री नहीं सर। एक मिनट रुकिएगा, कौन सा रूल लगाया आपने? 2011 बहस मत करिए, पहले रूल बताइए, कौन सा नियम लगाया आपने? सर 2011 का। कहाँ है 2011 का रूल बताइए सर 2011 आप ऑर्डर है। रूल पढ़िए आप। सर 2011 का जो ऑर्डर है सर। नहीं सुनेंगे आपको, आपको जो करना चाहिए अपील में करिए। डायरेक्शन देते सर मेरे केस कोर्ट में ना लगाए जाए सर। नहीं ऐसा नहीं था डायरेक्शन। सर इस तरीके से सर अगर केस को सुनेंगे सर क्या मतलब सर, न्याय के लिए सर यहाँ पे आते हैं, इस तरीके से सर ऑर्डर लेने के लिए नहीं है सर। खारिज भी करिए सर, रीजेंट ऑर्डर होने चाहिए सर। मेरे कोई बहस कंसीडर नहीं की जाती सर, न्याय नहीं मिलता सर यहाँ को सर। हाँ ठीक है, न्याय नहीं मिलता, इसलिए सर डायरेक्शन मेरे हमारे डायरेक्शन नहीं दूंगा, हमारे केस यहाँ पे ना आप लिख के दे दीजिए चीफ जस्टिस साहब नहीं को। करना चाहते आप वहां लिख के दे दीजिए, आप लिख के दे दीजिएगा। आप क्या बहस करते हैं सब रिकॉर्ड हो रही है, आपको कितनी बहस आती है, कितनी करते हैं आप, सब लिखाया जाता है। नहीं सर नहीं लिखा जाता ना सर। हाँ ठीक है, उसमें एक ही और लिखिएगा, सुन के जाइए। श्री विकास मिश्रा submits that case law laid down by Supreme Court in Uma Devi will not be applicable and case of the petitioners is required to be considered in terms of the rules of 2011. Full stop. He is requested to bring on, but to point out from the record that what are the provisions contained in the rules of 2011. Full stop. बताइए 2011 के रूल्स में क्या लिखा है? ऑर्डर सर बता रहा हूँ, जो ऑर्डर सर ऑर्डर नहीं, रूल्स आपने वर्ड यूज किया है। नियमितीकरण का सर जो ऑर्डर हुआ सर 2011 में, रूल्स बताइए। वो अकॉर्डिंग सर मैं देख लीजिए सर 2011 का जो ऑर्डर है सर इसमें सर सबका नियमितीकरण हुआ सर। ये हुआ होगा, लिखिए। सभी लोगों का हुआ सर, हमारा भी हुआ सर। He could not point out any rules in this behalf. Full stop. Regularization is to be made. रिप्लाई बुलाना चाहिए सर। Regularization is to be made in terms of the vacancies. Full stop. CMO has categorically mentioned that no posts for ST category were available for regularization of the petitioners. Full stop. This aspect has not been challenged by the petitioner. Full stop. In fact, petitioner has not challenged the order dated 14/3/21/3/2018 passed by the CMO, which is part of the return filed in the earlier writ petition। नंबर डाल लीजिएगा, जिसमें कॉल साहब का ऑर्डर है उसका नंबर डाल लीजिएगा, WP नंबर इतना इतना। Full stop. Once it has come on record that posts were not available, then rehorsed the vacancy position. Petitioner could not have claimed regularization. Full stop. Law in this regard is laid down in case of Uma Devi, and law laid down by Supreme Court is binding on all the subordinate, all the high courts and the subordinate courts. Therefore, the submission of Shri Vikas Mishra that law laid down by Supreme Court in Uma Devi is not applicable to the fact is contrary to the provisions contained in Article 141 and 142 of the Constitution, which makes it obligatory on the High Court to accept the law laid down by Supreme Court and apply it in its letter and spirit. Next, as far as it's section Article 141 and 142, 141. Next, as far as
plea of non-regularization is and non-enforcement of orders of the coordinate bench is concerned, petitioner's remedy is elsewhere. Full stop. It is clarified that coordinate bench had directed for consideration of petitioner's representation in terms of GAD circular dated 7/10/2016, and that circular, as discussed above, does not deal with regularization but only regulating the service conditions of daily wages. Full stop. Despite this, learned counsel is using loose language in the court, which is unbecoming of a officer of the court, without taking further cognizance of his misconduct, petition. The original order is maintained. चलिए